Good morning, guys. In today's lecture, we are discussing exponential and logarithmic functions. Guys, देखिएगा ये बड़ा ही सीधा साधा सा फंक्शन होता है, पर लेकिन लोगों को डर लगता है इससे. देखिएगा, we are going to study exponential and logarithmic function. Exponential and logarithmic function. देखिए गाइस, एक बात समझिए. हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब डिफाइन करते हैं तो बेसिकली ये फंक्शन हम इस टाइप से डिफाइन कर रहे हैं. एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स. इस ए को हम कहते हैं ए इज नोन एज बेस. इस बेस पर हम कंडीशन डालेंगे. इफ दिस बेस इज मोर देन वन देन व्हाट यूज टू हैपन. देखिए, मान लीजिए मेरा एफ एक्स है, सपोज 2 रेज टू पावर एक्स. तो आप यहां नोटिस करेंगे, सपोज आई वांट टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इट. y इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर एक्स. आप जरा टेबल बना लीजिए. x 0 है तो y 1 आएगा, 1 है तो 2 आएगा, 2 है तो 4 आएगा, 3 है तो 8 आएगा, और -1 है तो 1/2 आएगा, और -2 है तो आपके पास कितना आ रहा है गाइस? इट इज 1/4. -3 है तो 1/8. बाय लुकिंग एट दिस टेबल वन कैन इजीली कंक्लूड दैट कि जब x आपका पॉजिटिव है तो वैल्यू इंक्रीज कर रही है, द वैल्यूज आर इंक्रीजिंग. x अगर आपका नेगेटिव है तो आप देखिएगा द वैल्यूज आर कमिंग क्लोज टू 0. यू कैन से दैट y इज अप्रोक्सीमेटली टेंड्स टू 0. ऐसा आ रहा है. तो अगर मान लीजिए मैं इसको किसी ग्राफ पेपर पे इसका एक ग्राफ ड्रॉ करके दिखाऊं आपको, तो देखिए इसका ग्राफ कुछ ऐसे बिहेव करेगा. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. दिस ग्राफ विल गोज लाइक दिस. इट विल बी समथिंग लाइक दिस. It is, although it's not going to touch this x-axis, is very close to x-axis. I want to say that it is very close to x-axis like this, and like this. It will pass like this. This is the graph of y is equal to 2 to the power x that we have drawn here. Now, what will happen, guys, if I take this base is between 0 and 1. Suppose if I take, try to understand that, what is going to happen. Now, if my base a is greater than 0 but less than 1, suppose I consider y is equal to 1 upon 2 to the power x. The phenomena will be just reverse. It is something behave like that, 2 raised to power minus x. Here x is and y. Now, when x is 0, still it is 1. But it is when 1, it is 1/2. And if it is, you can say that -1, it is 2. It means when x is negative, then y is increasing. But when x is positive, y is tending to 0. The phenomena is just reverse of that graph. So you can say that when it is 2, it is 1/4. And when it is -2, it is 4. So now see, on the same graph paper, I am just going to trace the graph of it. Now see, what is going to happen with the graph of. Now, if I draw this graph with some different color, the graph will goes like this. Look at this. Just reverse like this. This is the graph of y is equal to 1/2 to the power x. So now you can imagine both are intersecting at 1. It is like this. So now, on the basis of this concept, this enables us that we are defining. Now this base may be different. This base may be changing. It is not necessary that always you will take base as 2. Base आपका कुछ भी हो सकता है. Now,
What exactly is a logarithm function? Try to understand it. What is logarithm function? I'm defining what is log function. What is log function? Now, first I'm defining the basic definition. If a raised to power x is equal to y, and I'm considering my base as positive, because if base is negative, then logarithm will not be defined. Now see, then we define, then log base a of y is equal to x. Now see, it is a just inverse function. Now look at this. 2 raised to power 3 is 8. Then we know that log base 2 of 8 is equal to 3. आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस बेस का कितना पावर डाले कि 8 आए, उसको राइट हैंड साइड पे लिखना है. This is the first illustration, guys. Second one is, suppose if I am writing 10 raised to power 2 is 100. So we know that log base 10 of 100, 10 की कितनी पावर डालने पर 100 आएगा? 2. So you are going to write it 2. Now on the basis of this, now depending on the base, now it's just a reverse phenomena. Look at this. अगर मैं 10 रेज टू पावर x लिखता हूँ और x को वैल्यू 2 देता हूँ तो ये मैप हो जाता है 100 पे. लेकिन क्या करता है कि log के केस में 100 इसको वापस कहाँ मैप करा देता है? 2 पे मैप करा देता है, क्योंकि यहाँ पर 2 किस पे मैप हुआ? 100 पे, और 100 फिर वापस जाके 2 पे मैप हो गया, इसलिए इनवर्स फंक्शन है. एक और बात समझिएगा यहाँ पर, जो मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूँ, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज, सम बेसिक प्रॉपर्टीज समझिएगा. क्या है बेसिक प्रॉपर्टीज इसकी? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. a raised to power 1 is a. So we define log base a of a is 1. Okay, this is the first property. When the base and the number coincide, its value is 1. The next one is a raised to power 0 is 1. So log base a of 1 is always 0. So log 1 to any base is always 0. Now I'm going to do some illustrations so that you can understand it. Suppose the question is, find the value of log base 9 of 81. So how you will react to this fact? Now since if we are writing log base a of y is equal to x, so it means a raised to power x is equal to y. So I'm assuming let log base 9 of 81 is equal to x. So this will imply my 81 will be equal to 9 raised to power x. This will imply 9 raised to power 2 is equal to 9 raised to power x. So this will imply x is equal to 2. So this way, guys, you can solve it. Now, another illustration, suppose somebody asked me that find log base root 2 of 4. So what I will do, let log base root 2 of 4 is equal to some x. So I will say that 4 is equal to root 2 raised to power x. That is 2 raised to power 2 is equal to 2 raised to power x by 2. So I will say that x by 2 is equal to 2. This will imply x is equal to 4. So these are some basic property. Now some basic laws of log that I'm going to prove. Now see, some basic laws. Try to understand what are the basic laws. Law 1, that is, if m and n are positive, then log base a of mn is equal to log base a of m plus log base a of n. Now I'm going to prove it. Look at this how. Let log base a of m is equal to x. This will imply a raised to power x is equal to m, and log base a of n, I'm assuming that it is equal to y. So a raised to power y is equal to n. Now if I multiply that, now my mn will be equal to a raised to power x into a raised to power y. So mn will be equal to a raised to power x plus y. Now again by definition of log,
I can say that log base a of mn is equal to x plus y. Now see, this will imply, I can say that clearly, that log base a of mn is equal to, now what is x? Log base a of x plus log base a of y. Now we can generalize this property as well, please. It is not for 2. You can extend it for n numbers, x1, x2, xn are in the product. So then you can write this as log base a of x1, base a of x2, log base a of xn. Now similarly we'll do the second property. Now see, what is the second property? Law 2. Law 2 is again m and n are positive, then log base a of m by n is equal to log base a of m minus log base a of n. Now see how it will be proved. Again we are assuming let log base a of m is equal to x. So this will imply a raised to power x is equal to m. A raised to power x is equal to m, and log base a of n is equal to y. So a raised to power y is equal to n. Now dividing them, what is m by n? It will be a raised to power x upon a raised to power y, that is equal to a raised to power x minus y. Now I can say that this will imply I have a raised to power x minus y is equal to m by n. So by definition of log base a of m by n is equal to x minus y. Now what is x here? X is log base a of m minus log base a of n. So that is the proof of this property, and you can use it. Now law number 3. What is law 3? M and n are positive. Log base a of m to the power n is equal to n log base a of m. Now see how I'm going to prove it. Let log base a of m is equal to some x. So I can say that a raised to power x is equal to m. Now taking nth power both side, it is equal to m raised to power n. We can write this as a xn is equal to m raised to power n. Now again using the definition of log. Now log base a of m to the power n is equal to xn. So now what is x here? It is n log base a of m. Now this proves the property number 3 or law number 3. Now we have another law. Just try to understand this. Law number 4. If we have log base a raised to power p into n, it is equal to 1 by p into log base a of n. Try to understand that how we are going to prove it. What I am assuming here, let log base a to the power p of n is equal to some x. So by definition of log, I can say that a raised to power p whole to the power x is equal to n. Now this will imply a raised to power px is equal to n. Now if I define that, apply the definition here, this will imply px is equal to log base a of n. Now this will imply my x is equal to 1 by p
of log base a of n. Now what is x? This will imply log base a raised to power p of n is equal to 1 by p log base a of n. सो इट मीन्स बेस की जो भी यहाँ पावर है वो 1/th में बन जाती है. अगर फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसा लिख रहे हैं log base √2 of y, so it is turning out to be, now √2 is how much power? That is 1/2, that is 2 log base 2 of y, like this. Now another property, that is law number 5, I'm going to prove here, that is log base a of m is equal to 1 upon log base m of n. If the base and the number interchange, sorry, it's not n, it's a, then reciprocal comes. So proof is something like this. See, let log base a of m is equal to some x. So then what will happen? My m will be equal to a raised to power x by definition of log. Now can I say that m raised to power 1 by x is equal to a? So if I apply the definition of log again, then 1 by x is equal to log base a of m. So you can say that my x is equal to 1 upon log base a of m. Sorry, the definition is here, base is m, and it is a. Base is m there because m का power 1 by x है, तो base m रहेगा of a. Now this will imply log base a of m is equal to 1 upon log base m of a. So this way guys we have proved these 5 basic laws by definition of log, and I hope आपको ये सारे समझ में आए होंगे. Now one more law that I want to change, that prove for you, that is nothing but the log base changing formula. Law of base changing formula. Look at this. Law of change of base. What is law of change of base? This is law number 6 that I want to deal with you. That is for m a and b greater than 0, a is not equal to 1 and b is also not equal to 1, then we define log base a of m is equal to log base b of m and log base b of a. Now here the base changes to b. So now the proof is something like that. हमने मान लिया कि let log base a of m is equal to some x. तो guys just tell me a to the power x किसके बराबर आ जाएगा? m के बराबर आ जाएगा. एक काम कीजिए, taking log base with base b, both sides. Now see what is going to happen. Log base b of a to the power x is equal to log base b of m. Now by the property of log, the x will come ahead, that is x into log base b of a is equal to log base b of m. Now what is x? X is your log base a of m. Is equal to log base b of m. So I can say that this will imply log base a of m is equal to log base b of m log base b of a.
Now there is a one more deduction here. Now what I will do here, if b is replaced by m, then see that what is going to happen. Now see that when the base and number coincide, so we obtained the previous property, guys, log base m of a. So these are some properties, guys, that I have discussed in this video. But now I'm telling you some log that please try to understand that on the basis of base, if the base is 10, then we call this as common logarithm. एंड इसको हम कहाँ यूज करते हैं? केमिस्ट्री में, जहां अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको उसके बारे में ही बताएंगे. देयर इज अनदर बेस दैट इज व्हाट वी कॉल्ड ई का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होता है 2.73. ये एक इरेशनल नंबर होता है. इसको हम कहते हैं नेचुरल लॉग. इसको हम कई बार ln भी लिखते हैं, ln ऑफ x, विच इज सेम एज log x, जो कि हम अपना मैथमेटिक्स में कैलकुलस में पढ़ते हैं. मैथमेटिक्स कैलकुलस. तो ध्यान रखिएगा, अब जैसे मान लो आप कैलकुलस में आपने पढ़ा है कि डी बाई डी एक्स ऑफ log बेस ई ऑफ एक्स 1/x पढ़ा है. लेकिन अगर आपको कह दिया गया कि log बेस 10 ऑफ x, तो पहले आप बेस चेंज करोगे ई में. बाय बेस चेंजिंग फॉर्मूला log बेस ई ऑफ x बाय log बेस ई ऑफ 10 बनेगा. तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे log बेस 10 ऑफ x, तो ये तो कांस्टेंट आ जाएगा इंटू 1/x. ये इसका आंसर आएगा. तो ये ऐसी गलतियां ना करें. एक और चीज मैं आपके साथ यहाँ शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ई का मतलब नहीं पता है. देखिए, ई रेज टू पावर एक्स एक इनफाइनाइट सीरीज है. बाई फैक्टोरियल 2, एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, एक्स रेज टू पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी. इस सीरीज के सम को हम ई की पावर एक्स कहते हैं. अगर यहाँ x को मैं 1 डाल दूं तो e आता है मेरा 1 प्लस 1 बाई फैक्टर 1. अगर आप यहाँ देखेंगे तो इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग एक्सपेंशन, जिसको हम अप्रोक्सीमेट कर देते हैं 2.73, और ये इरेशनल नंबर आता है. तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, गाइज. तो अब इसके बाद आता है, चलो हमने ग्राफ तो बना लिए ई का, और इसका लॉग का ग्राफ कैसे बनेगा? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. देखिए, मैं अभी एक ही ग्राफ पेपर के अंदर दोनों ग्राफ आपको बना के दिखा रहा हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा. अगर मान लीजिए आप बेस 2 पे ग्राफ बना रहे हैं, सपोज यू आर मेकिंग दिस ग्राफ. अभी मैंने आपके साथ शेयर किया था, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x. अब आप क्या करेंगे? अगर आप ग्राफ बनाना चाह रहे हैं सपोज log बेस 2x का, तो ये जो लाइन है y इज इक्वल टू x, इस ग्राफ का रिफ्लेक्शन इसके ऊपर ले लेंगे आप. देखिएगा रिफ्लेक्शन कैसे आएगा. रिफ्लेक्शन कुछ ऐसे आएगा, द ग्राफ विल गोज लाइक दिस. ये थोड़ा सा टिल्ट हो गया लाइक दिस. ये बनेगा ग्राफ log बेस 2 ऑफ x, समथिंग लाइक दैट. इसका रिफ्लेक्शन ऐसे जाएगा. एक ग्राफ को देख के आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि log infinity is infinity, and just try to understand that what is going to happen. log 0 is minus infinity. ये बेस 2 पे बात कर रहा हूं मैं. it will be goes like this. ओके. और अगर आप ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, मैं अब आपको एक ही उस पेपर में भी ये ग्राफ शेयर करना चाहूंगा मैं आप लोगों के साथ. देखिएगा, समझिएगा जरा. वो तो मैं एक ग्राफ पेपर पे रफली बना रहा था. और अगर सपोज आप ग्राफ बना रहे हैं लॉग का और एक्सपोनेंशियल का, तो देखिए कैसे ग्राफ जाएगा. सपोज दीज आर योर एक्सेस. आपने ये ग्राफ ऐसे बनाया था y इज इक्वल टू 2 टू दी पावर x का. तो
अब आपने यहाँ क्या करना है, अगर log का ग्राफ बनाना है तो इसका रिफ्लेक्शन ले लेना है अबाउट y इक्वल टू एक्स. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ log बेस 2x. ये भी कहाँ से पास कर रहा है, ये पास कर रहा है 0,1 से और ये पास कर रहा है 1,0 से. नाउ सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अगर मान लीजिए आपका बेस 0 और 1 के बीच में है तो तब कैसे ग्राफ बनेगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा. देखिए देयर आर सो मैनी इन्फॉर्मेशन एंड कोशिश मेरी यही है कि आप लोगों के साथ ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं बांट सकूँ. जरा ध्यान से समझिएगा. अभी हमने ग्राफ बनाया था, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. वी हैड मेड द ग्राफ ऑफ, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 1/2 की पावर x. यहाँ आपने देखा कि बेस किसके बीच में लाई कर रहा है, यहाँ पर बेस हमारा ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 है. ओके तो इस केस में आपका जो ग्राफ बनेगा लॉग का ग्राफ, मैं उसको दूसरे कलर से फिर कर रहा हूँ, देखिएगा कि सो दैट आपको समझ में आए. आपको रिफ्लेक्शन ले लेना है, इसको इसके अबाउट आप रिफ्लेक्ट कर देंगे y इक्वल टू एक्स के अबाउट. तो y इक्वल टू एक्स के अबाउट अगर आप इसको रिफ्लेक्ट करेंगे, देखिए ये एक और चीज़ समझिएगा, जो ये ग्राफ है जो मैं इसका बना रहा हूँ एक्सपोनेंशियल का, इट विल बी वेरी क्लोज टू एक्स एक्सिस एज वी डिस्कस्ड. तो ये जो ग्राफ आएगा लॉग का, इट विल बी समथिंग लाइक दैट. ये ग्राफ बनेगा y इज इक्वल टू log बेस 0.5 यानी हाफ x, ऐसे बनेगा. ये पॉइंट आएगा 1,0 और ये पॉइंट आएगा 0,1. सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल. टिल देन बाय एवरीवन. सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके साथ आएंगे लॉग टेबल के साथ.